इस टेलीविजन का जो हीरो होता है ना, वो ना सब कुछ कर सकता है। ओके वो सुपरमैन होता है, वो अच्छा बेटा भी होता है, अच्छा बाप भी होता है, अच्छा भाई भी होता है, बॉयफ्रेंड भी अच्छा होता है। But his thing is, I think some people, always some people grow up or evolve with that thought in their mind that they've never got what they deserve. Like one of my lawyer friends said a very interesting thing. He's like, we're also actors. We also do our lines. We also remember our lines. Thriller part of it, और हम बता नहीं पा रहे हैं सारे इंटरव्यूज थ्रिलर है क्या। Hey guys, this is your host Ria, and today we have someone who brings magic to every moment on screen. Well, you guessed it right, Karan Wahi. Welcome to Bollywood Society. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। Okay, so guys, पहले तो आपको बहुत लोगों ने पूछा भी होगा ये क्वेश्चन कि what is the राज of this name राय सिंघानिया versus राय सिंघानिया, ये क्यों है? यार राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी सिर्फ राज मतलब इट्स अ थ्रिलर हो शो, तो इसलिए राज है। एंड आई थिंक it's a very very apt title because I think when we were looking at a title, because it's a long format web show, the title shouldn't look like a television show or look like an out of the box name जैसे web shows के होते हैं. But I think Raisinghani versus Raisinghani is an apt name because we all work for the Raisinghani firm. Anushka, that's Jennifer's character, is a Raisinghani. Her father, Sanjay ji, his character is Rajdeep Raisinghani, the head. I'm working for the same firm, and so is Reem's character, Ankita. Oh, yeah. So I feel वो एक राइसिंघानी वर्सेस राइसिंघानी इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि क्या है, बिकॉज दैट्स द थ्रिलर पार्ट ऑफ इट, और हम बता नहीं पा रहे हैं सारे इंटरव्यूज थ्रिलर है क्या। अच्छा, ये नाम क्यों है ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बाय द एंड ऑफ द शो पता चलेगा। by the end of the show. I will wait. Okay. Yeah. So you're playing the role of lawyer Virat Chaudhary in it, and which is very different if you compare जो आपने पहले भी roles किए जी। हैं. So overall experience कैसा रहा था आपका? आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अभी भी चल ही रहा है, और बहुत अलग। हम ना यूजुअली बोलते हैं कि अलग है अलग है अलग है, बट ही इज समथिंग दैट आई रेड समवेयर दैट आई होप इट्स नॉट अ टेलीविजन कैरेक्टर, एंड आई वाज लाइक आप एक बार शो देखो, आपको पता चलेगा वो क्या कैरेक्टर है, बिकॉज टेलीविजन का जो हीरो होता है ना, वो ना सब कुछ कर सकता है। Okay. वो सुपरमैन होता है, वो अच्छा बेटा भी होता है, अच्छा बाप भी होता है, अच्छा भाई भी होता है, बॉयफ्रेंड भी अच्छा होता है, पति भी अच्छा होता है, सैक्रिफाइस भी करता है, और ही इज ऑलवेज द बिग मैन एंड ही इज ऑलवेज लविंग एंड केयरिंग. दिस वन इज completely opposite in every aspect of life. Oh. So I think it was fun because and it is still fun. Sometimes he frustrates me a lot because sometimes Virat does things that I don't know. I'm like, how does someone be so Yes. Amina? Like, why would you do that to someone who loves you? Okay. But I think that's what I love playing him. That's what I love about him, because I don't know if these kind of characters will keep coming to me that often. Oh. So because I've usually played like Boy Next Door, Good Boy characters that keep coming to me more often than something like Virat. And I'm तो loving it है। So you would love to play bad villain. यार मजा आता है ना, कुछ क्या होता है ना, क्योंकि अब आप सोचो ना, अगर आप 5 जगहों पर गुड बॉय बन रहे हो, तो आप कितना अलग कर लोगे? वो भी है। क्या ही अलग कर लोगे आप? मतलब क्योंकि वो डेफिनेशन उस अम्ब्रेला के अंदर ही आती है कि इज अ गुड बॉय, तो आई थिंक अलग ही मजा है उसमें। इसका अलग ही मजा है थोड़ा। ओके, सो लॉयर का रोल प्ले करने के लिए आपने कुछ रिसर्च की थी, बेसिक ट्रेनिंग ली थी या कुछ? ट्रेनिंग नहीं ली थी। We met a couple of lawyers in the beginning to just understand certain aspects of it. They told us to watch videos because हमको जो लगता है कि कोर्ट कैसा होता है, वो हमारा पूरा आई थिंक हिंदी फिल्मों से ज्यादा we've taken. बहुत कम हिंदी फिल्में हुई हैं जिनमें कोर्ट में जैसा काम होता है या बात होती है वैसे बात करी जा रही है। सो आई थिंक उसके लिए हमें एक्चुअल कोर्ट फुटेज या चीजें देखनी पड़ रही थी कि हाउ डू लॉयर्स एक्चुअली बिहेव,
if supposedly I am I'm fighting the case against you, it doesn't mean outside this court we can't be friends. We might be friends, Yes. but we're doing our job. So I think वो छोटे छोटे नुआंसेस तो काफी एक दो दोस्त हैं मेरे जो लॉयर्स हैं, तो कुछ अगर गलत होता है तो वो बता देते हैं Nice. कि यार हमने देखा ये मत किया कर. अच्छा, तो वो शूटिंग में आते थे? शूटिंग नहीं, मतलब जैसे मैंने उनको जैसे एक दो बारी मैंने उनको कुछ फुटेज भेजी या मैंने अच्छा. उनको कोई स्क्रिप्ट भेजी कि यार Clarify ये के लिए बता कि- कि ये इस दफा का मतलब क्या है. अच्छा. क्योंकि एक तो इतनी सारी तो I सेक्शन know. है ना कि याद ही नहीं रहता कि सच में. सेक्शंस, मतलब मैं उनको भी बोलता हूँ तुम्हें सब कुछ याद है. बहुत टफ होता So like like one of my lawyer friends said a very interesting thing. He's like, we're also actors. है. We also do our lines. We Yeah. also remember our lines. So it's and we also have to put up a show. Same but different. It's just that we don't have a camera and we Yeah. don't have a retake. Oh yes. So these small things we've been keeping in mind, and every time there is a law अपना क्या कहते हैं या कोर्ट का कोई सीन आता है, जैसे आज द एंटायर टीम इज एक्चुअली शूटिंग एट द कोर्ट, तो उस दिन ज्यादा हम लोग we're more on our toes to know that we're saying something right or we're like Okay. doing things right. ओके. सो सपोज इधर एक तरफ है करण वाही, दूसरी तरफ है विराट चौधरी, तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज अगर आप कंपेयर करोगे खुद से और विराट चौधरी से, तो क्या है वो स्पेशल? जेनेरिक सिमिलैरिटीज बहुत सारी हैं क्योंकि जैसे वो भी दिल्ली से है, सो बहुत सारी ऐसी, मतलब बहुत टाइम के बाद ना मुझे आजादी मिली है वो टोनेशन में बात करने की, दिल्ली की बातें जो हम जैसे गुस्से में जब हम दिल्ली में बोलते हैं चीजें जो शायद गालियां ना, गालियां भी होती, मतलब गालियां की इट्स नॉट अ शो वेयर वी आर अब्यूजिंग एक्चुअली. यस एग्जैक्टली. Also because we have to keep in mind what is our PG and what are we serving. But like एक तरीका होता है ना दिल्ली का, एक जो अल्लड़पन है हिंदी में हमारी, वो बहुत आई थिंक ऑन द फेस दिखता है. फिर there have been scenes that I've done as Virat that I felt I have done in real life. Oh, for example? Like how I think most of the scenes that I relate to are scenes with Anushka. अच्छा. So like something like I think जैसे लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में अलग होते हैं because they're genetically different. So how like Virat reacts to certain things, वैसे ही करण भी वैसे रिएक्ट. मैंने किया है, मतलब not everything but like a lot of times when I'm doing something I have a smile because I know shit I've done this. So you felt like Deja vu. हाँ, मतलब it's like I've done this. So it's also in a way it's helping. Yes, it is. You're like you know what you've done, and even if you don't like it and you think that oh what a bad guy, you go back home and you're like shit I did the same. I need to change my ways. So I think so बहुत कम चीजें हैं because जो उसका जेनेटिक कोड इस चीज के अलावा, लड़कियों के अलावा या गर्लफ्रेंड के अलावा जो जेनेटिक कोड है ना वो बहुत अलग है. That is not me because also his structural of his family is very different and his reasoning is very different. But sometimes when he gets angry, I see a lot of similarities. Okay. Angry भी हो गया एक point. Yeah. And बुरी चीज और अच्छी चीज क्या है विराट में, अगर आपको खुद से यार अडैप्ट अच्छी चीज मतलब देखो वो लड़का अच्छा है. He's just I just feel so however much I have understood Virat, he's not a bad guy, but I think he's been raised up in a way where he's not black not white, gray. Gray तो he is. I think his thing is, I think some people always some people grow up or evolve with that thought in their mind that they never got what they deserved. Oh, It could be personal or professional. okay. So I think he's somebody who's taken that वो खुद से लड़ रहा है, too खुद के लिए much- लड़ रहा है. too much sometimes ना आप ना हर छोटी सी छोटी बातों पे आपको अगर कुछ मिलता नहीं है ना तो आप तो मैं तो डिजर्व करता था, like bias. करके दिखाऊंगा. मैं तो डिजर्व करता था, देखो ये तो bias है. And I think some people work on it, they work harder to get it next time. Some people are like Virat who take it to their heart.
Oh. And then now they'll be like, "Acha, you didn't give me this. Now you see what I'll do to you." Oh. So it's one of these. Revenge. It's like every time I'm hurt, I'll hurt you twice, अच्छा. Nice. like and I will hurt you for just for the sake of hurting you. अच्छा. Like if you don't want to be with me, okay, don't be with me. Then I will make sure that everywhere you go with another guy, na, I'll be there. Oh. That is. Don't want to be with me. That Okay, is. don't be with me. But मैं तो करूँ. So it's like one of those things that I see. Possessiveness. Possessiveness also is a very, like, it's a very one-dimensional word. Possessiveness, but it's like he's एक very ego real. hurt कर दिया. I just find him very real. I think men in general are like this. Yeah. It They are- is true. When Indeed. women say na that oh, I've been in a toxic relation, I've heard every woman say this कि एक ना एक आदमी तो मेरी जिंदगी में बहुत toxic. So I think Virat वो आदमी है. Oh. Virat is that man that who's very very good for you if you are with him, but he's not good for your soul and for your mental peace. Oh. Like he might love you the most and he might keep you the happiest, Okay. but he will also like fry your brains and you will like get really really fried and you will question yourself कि मैं क्यों हूँ भाई इसके कि मैं इसके साथ क्यों हूँ और मैं बार बार क्यों इसके बाद वापस चली जाऊँ? हाँ. ओके. तो ये चीज भी कई बार देखी गई है कि आज की डेट में कोर्ट रूम ड्रामा ज्यादा बने नहीं है. सॉरी. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट एंड हाउ डज इट फील बीइंग अ पार्ट ऑफ कोर्ट रूम ड्रामास? या कोर्ट रूम ड्रामा आई थिंक इसलिए भी ज्यादा नहीं बनते हैं क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कोर्ट रूम फिल्में बनना और चीजें बनती थी. आई थिंक हमने ना कोर्ट्स को जिस तरह से पेश भी किया है ना फिल्मों में पहले स्टार्टिंग में, हमने उसको इतना ओवर एग्जैजरेट कर दिया कि आई थिंक वो कोर्ट रूम ड्रामास का वो फील शायद खत्म हो गया. ऑल्सो आई फील कोर्ट रूम ड्रामास नीड टू बी इंटरेस्टिंग. We still as a I think as an audience we still don't know if we are what are we, see a courtroom drama I feel can only be either a thriller or a light-hearted courtroom drama. In either case I feel the scripting needs to be very very good for audiences to hold on to that. Also because there is so much content out there that I hope कि अब कोर्टरूम ड्रामा अगर ये चल रहा है तो इसको देखा देखी आना शुरू हो. लेकिन फिर वही वाली बात हो जाती है जब कोर्टरूम ड्रामास बहुत सारे भी आ जाते हैं then you start comparing two things which is I feel very wrong because two things which have been made separately can never be compared. Can never be compared. But I feel I hope in the recent in the future people actually think about it. बट वही है कि आई थिंक उसके अंदर बहुत एक तो रिसर्च भी जाती है क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कोर्ट अगर आप दिखा रहे हो या आप कुछ कर रहे हो या एक प्रोफेशन कर रहे हो आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. तो मतलब क्योंकि कोई भी गुस्सा हो जाता है. रेस्ट्रिक्शंस तो है. तो रिस्ट्रिक्शंस इतनी होती हैं कि आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड नो व्हाट यू आर डूइंग विद फैक्ट्स चेकिंग. ओके. अगर आपके हिसाब से ऑडियंस एज अ व्यूअर आपके शो को देख रहा है तो विराट की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो लगे कि यार ये बहुत सही किया इसने, या फिर आपका पर्टिकुलर सीन हो गया फेवरेट फ्रॉम द शो? कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई रिव्यू नहीं है जिसमें किसी ने ये बोला हो कि यार ये विराट बहुत सही है. आई थिंक उन्होंने सबने यही बोला है जो वी एक्सपेक्टेड देम टू से एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीवनस लाइक डूड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन, व्हाई इज ही लाइक दिस, बिकॉज़ ही इज. उसका जवाब भी मिल गया. मतलब मैं ना जवाब नहीं दिया मैंने, बट आई एम वेरी हैप्पी विद इन माई सेल्फ बिकॉज दैट इज व्हाट आवर फंडा वाज. आवर फंडा इज नॉट फॉर यू टू लाइक विराट. Okay. Our funda is for you to understand Virat. Understand Virat. And then you take your call if you like him or not. Exactly. Because on the face he is not a likable guy. वो व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि अगर वो विराट की जगह होते तो वो क्या करते. नहीं, but वो यार पता क्या, I think वो ना I feel I don't know the kind of reviews that I have read or I have heard or I've been told. I'm glad that is concentrated on what we're doing as characters and not concentrated on कि अच्छा क्योंकि करण कर रहा है तो करण के फैंस को तो बहुत ही प्यारा लग रहा है. Okay. So I'm very happy that people even like my close fans and like people who I know, fans that I'm in touch with, their feedback or their review I keep reading sometimes. अच्छा, what was the best DM that you got from your fan?
नथिंग यार, और जस्ट आई थिंक एक मेरी फैन है जो हर बार सिर्फ यही लिखती है, थैंक यू फॉर गिविंग अस एक्टर वाहिद, बिकॉज मैं बीच में बहुत कम एक्टिंग कर रहा था, अच्छा, यस। बहुत होस्टिंग कर रहा था, तो फैंस बहुत इरिटेट हो गए थे, कह रहे कि आप एक्टिंग तो करते नहीं हो, आप सिर्फ बोलते रहते हो, आप करते तो हो नहीं, और फिर आप टीवी भी नहीं करते हो, फिर आपको वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। कमिंग टू दैट, आपने ऑलमोस्ट आफ्टर 14 इयर्स जेनिफर के साथ कम बैक जी। करा है ऑन स्क्रीन। सो जो बॉन्डिंग थी पहले की और अभी, कुछ चेंजेस नजर आए या फिर क्या कुछ खास? यार 14 साल पहले मैं सिर्फ जेनी को जानता था, एंड आई हैड वर्कड विद हर, एंड ऑब्वियसली आई हैड वर्कड फॉर 1.5 years विद हर, एंड वहीं से दोस्ती हुई थी, और हम उसके बाद ऑफ कैमरा भी इतनी बार मिले हैं ना हम सब, क्योंकि हमारा ग्रुप एक है, तो I think the difference is that now we're like very good friends, like all of us, like जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं, और जो अदर एक्टर्स हैं या जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे दिल मिल के डायरेक्टर थे, तो वो भी हमें सेट पे ही मिले थे, और वो भी हमारे ग्रुप में है, अनिरुद्ध। नाइस। So I think it's like a Reunion. It's always great when you're working with friends, because and friends who you meet every day, like every third day you're Exactly. meeting them. So it doesn't look like you're going to work, because you have a Connection A, already. you have a connection, and B, you have a reason now to just chill with Yeah. them every day when you didn't have a reason to chill. Exactly, agree. Well, lastly, Karan, we would love to know, our fans would love to know कि आगे अब क्या सरप्राइज होने वाले हैं यार फैंस को, और कौन कौन से रोल करना चाहोगे? ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि ये ऐसा रोल करना है या वैसा रोल करना है। आई थिंक सिर्फ यही है कि जो काम में मजा आएगा, जो काम अच्छा लगेगा, जो काम ऐसा लगेगा कि हाँ ये करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो मुझे इतना आई एक्चुअली डोंट थिंक अबाउट इट टू मच, but yeah, like after this I'm doing my other show that I had done last year, उसका second season I'll do, फिर hopefully Rising Honey का part 2 होगा, of course, फिर वो करेंगे। touch wood. Okay.